Hello students, I hope you all are fine and doing well in your studies. We have already started with chapter number 4 and we are on the last topic of our chapter. Right? We have started the topic that is properties of material. Where in the previous video we have discussed about the two properties, that is appearance and hardness. Right? Today we will be discussing the next property, that is soluble and insoluble. Right? The next property is soluble and soluble. Soluble and insoluble. As the name suggests, soluble means what? If any substance, if we are adding in water, if any substance we are adding in water, if it completely disappears after mixing it, after stirring, okay, after stirring or mixing, if it completely disappears, then we can say that substance is soluble in water. Okay, so what I can say? Substance is which completely disappear in water, then such substances are called soluble in water. Why in water? Because we are dissolving in water. Okay, which completely disappear or dissolves in water, then such substances I would say as soluble substances. Okay, and the other one, insoluble substance. Insoluble means what? Substance which does not disappear or dissolve completely even after stirring for long time, after mixing for, उसको पानी में डालने के बाद बहुत बार मिक्स करने का ट्राई करे हो, still it is not mixing, it is not disappearing. Okay, then such substances are called insoluble substances. तो इसका opposite है substance which disappears completely, and insoluble substance which does not disappear completely in water. So those will be insoluble substances. Right? Let us discuss few examples. Substances में हम right now we will be discussing only about solid substances. Okay, so if I talk about that, so we can say sugar. If you are adding sugar in water, if you mix, it will dissolve, it will completely disappear. So I can say sugar is soluble in water. Another example you can take is salt. Right? Salt, if you are adding in water, it will completely disappear. Right? What else you can take? Okay, just think what else you can take that can be dissolved in water. Right? Few more examples by your own. Right? Next, substances which are insoluble in water. Okay, which are insoluble in water. Say for example, you can say sand. Right? Sand does not dissolve in water. Right? What else you can say? You can say chalk powder. Right? Chalk powder which we write it on board, chalk. उसको powder form में करो and then try to mix it in water. It will not dissolve. Right? Then sawdust. Okay, sawdust on mixing in water, again it does not dissolve. Sawdust क्या होता है पहले तो? Right? Sawdust क्या होता है? If you have visited the furniture carpenter shop, so you must have seen there are many powder of layers of what do you say, wood, right? Or powder जो होता है, that is called what? Sawdust. So those all are insoluble in water, right? But still here we have only discussed about the solids that are insoluble in water. अभी जो मैंने discuss करे वो क्या है? Solids है. Okay. Then there are liquids also which are soluble in water. Okay, liquids are also there which are soluble in water. Okay, say for example vinegar, जो खाने में cooking में use होता है, right, for taste, right? Vinegar है, lemon juice है, orange juice है. Those all are what? Those all are liquids that are soluble in water. Right? So ऐसा नहीं only solids ही soluble होते हैं. Liquids are also soluble and even gas are also soluble. We'll see how gas is soluble in water. Okay? इसका importance बहुत importance है. Gas are soluble in water. Okay? So liquids भी soluble in water है. Now there are certain liquids which are insoluble in water. कैसे? तो oils, ठीक है? You can say mustard oil, right? You can say kerosene. Okay? These are the substance which are insoluble in water. Okay? दे विल नॉट डिजोल्व इवन, तो क्या होगा एकदम सेपरेट लेयर बन जाएगा, पानी का लेयर उसके ऊपर
ऑयल का लेयर, राइट. यू मस्ट हैव सीन ऑल्सो, राइट. घर में अगर आपने देखा होगा गलती से पानी में अपने ऑयल डाल दिया तो यू मस्ट हैव सीन कि ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, राइट. अब फ्लोट्स क्या होता है वो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, राइट. सो वी हैव डिस्कस सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, लिक्विड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, इवन गैसेस आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर. वी विल टॉक अबाउट ऑक्सीजन ओवर हियर. व्हाई, क्यों जरूरत है? बिकॉज वी नो दैट वी नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, है ना. हम ब्रीदिंग करते हैं, क्या लेते हैं, वी टेक इन एयर, बट एयर में हमारी बॉडी में क्या यूज होता है? एयर में से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन यूज होता है, राइट. सो वी कैन से वी टेक इन एयर एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हमारे लिए तो ठीक है, हमारे तो वी हैव एयर इन आवर सराउंडिंग, हमारे ओपन एरिया है. बट देयर आर एनिमल्स, प्लांट्स दैट आर लिविंग इन अंडर वाटर, राइट, that are called aquatic life. Aquatic life मतलब plants and animals that are living in water. From where do they get oxygen? ये भी सोचने का सवाल है ना. Why they get oxygen from the oxygen dissolved in water. Oxygen is of course very less soluble in water. ठीक है, ऑक्सीजन है वो कम soluble होता है वाटर में, बट जो aquatic plants and animals है that level of oxygen is enough for the life, right. So you can say कि gases dissolving in water is an important factor for the survival of the aquatic life, right. We can say कि जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है एयर में वो क्या होता है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है. किसके लिए? फॉर द सर्वाइवल, जिंदा रखने के लिए एनिमल्स एंड प्लांट्स को अंडर द वाटर, राइट. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉपर्टी ऑफ soluble and insoluble. Now we will discuss, we'll move to the next property that is called float and sinks. Objects में float or sink, right. Sink in water, you can say in water. Now what does float means and what does sink means? Okay, so I will give you few examples and then after you will understand what it is. Take a bowl, और ये आपके घर में जो टब है, right, home, at your home you must be having tub, right. So inside that add some water, मतलब fill it up to half, ठीक है, with the water. उसके अंदर you add a wood piece डालो, तो what you will see, what you will observe? Yes, you will observe what, that it is remaining above the water के ऊपर रहता है, राइट. जिसको बोलते हैं float, which remains above the water and which does not get immersed मतलब नीचे डूब नहीं जाना, ठीक है. so wood है. similarly you take a ball, ठीक है, rubber ball, tennis ball, plastic ball, any ball you can take, same thing will happen, right. it will remain on the surface of water, तो उसको क्या बोलते हैं? float. उसको क्या बोलते हैं? the object floats, right. similarly you can take leaves, ठीक है, leaves also you can add, so you will see that it floats on water. So these are the objects which are lighter than water, so उनको वो they will float on water. Understood? The another opposite of that is sink. Sink means what? On adding in water they will move at the bottom of the vessel, ठीक है. हमारे बॉटम जो भी मतलब टब के, हमारे यहाँ पर वेसल कौन सा है? टब है, तो टब के बॉटम में चला जाएगा. कैसे? कौन से एग्जांपल्स? सो यू मस्ट बी हैविंग कीज एट योर होम, तो की डाल दो आप अंदर, चाबी डाल दो अंदर, सो विल सी इट विल मूव डायरेक्टली डाउनवर्ड, इट विल नॉट रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, राइट. सेकेंडली यू कैन टेक कॉइन्स, ठीक है, कॉइन ले लो आप, स्टोन ले लो, ठीक है. दोज ऑल वर्ड ऑन पुटिंग इन वाटर दे विल immerse and will settle at the bottom of the vessel. So such substances are called that they sink in water. उनको क्या बोलते हैं? These are heavier than water, so उसको क्या बोलेंगे? They sink in water. Understood? जैसे अभी मैंने बताया था soluble insoluble में oil है that floats on water, वो ऊपर तैरता है, right? Okay. So I hope you understood what is float and what is sink, right? Let us move to the next and the last property of our chapter, that is transparency.
transparency. What does transparency mean? Okay, so you must be very familiar with these terms. What does transparency means? Okay, transparency में we have three objects. One is transparent object, transparent objects. Okay, transparent objects, or you can say substances. Like you must all have visited the grocery shop, है ना, किराने की शॉप आपने देखी ही है, राइट? You must have gone and you must have seen chocolates are there. कहाँ चॉकलेट्स होती है? एक बॉटल में, ग्लास के बॉटल में रखी होती है, राइट? ग्लास वेसल में या जार में रखी होती है, राइट? नाउ हाउ डू यू सी दैट देयर इज अ चॉकलेट? बिकॉज जो ग्लास मीडियम है, जो ग्लास मटेरियल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, दैट अलाउज अस टू सी थ्रू इट क्लियरली. हम आर पार उसके देख सकते हैं ग्लास के. ओके, एंड दैट टू क्लियरली. ओके, what we can see? We can see objects clearly. Okay, we can see the objects clearly behind that, those substances. So वो object को क्या बनूंगा? I can say that those substances or those material is called as transparent material. और कौन से transparent material? ग्लास हो गया. फिर some plastics are there, right? जैसे हमारे नोटबुक के कवर पे एक प्लास्टिक होता है, that is transparent, right? Then air. Now you are watching me, ठीक है? अब आपका मोबाइल तो ऐसे देख रहे हैं मेरे को, हमारी ये वीडियो, तो बीच में क्या है? बीच में एयर है, and still you are able to see the मोबाइल में वीडियो आप मेरा देख रहे हो एकदम क्लियरली दिख रहा है, राइट? मीन्स व्हाट? एयर अलाउज अस टू सी क्लियरली, राइट? एयर के आर पार हम देखेंगे, स्टिल वी कैन सी इट क्लियरली. सो अगेन एयर विल बी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. व्हाट एल्स विल बी ट्रांसपेरेंट? व्हाट एल्स? वी कैन से वाटर आल्सो ट्रांसपेरेंट. हम काफी बार देते हैं पानी के नीचे भी हम इजीली वी कैन, इफ क्लियर वाटर इज देयर, ठीक है, मडी वाटर नहीं चलेगा, या कोई कचरा वाला या व्हाट यू कैन कलर्ड वाटर में वी कैन नॉट सी क्लियरली, बट यू कैन से एकदम ट्रांसपेरेंट नीट एंड क्लीन वाटर है तो वी कैन सी इट क्लियरली. सो दैट वाज फर्स्ट ऑब्जेक्ट, one kind of materials. Another is opaque object. What are opaque? Opaque object or opaque substances. You can say here also substances लिख देते हैं. What are opaque substances? So, say for example, I have taken this book. I have taken this book. Can you see my face? You cannot see my face. राइट? मीन्स क्या है? आई कैनॉट सी थ्रू द ऑब्जेक्ट, आई कैनॉट सी एनीथिंग, पीछे का मैं कुछ भी नहीं देख सकता हूं. ओके, देन सच सब्सटेंसेस, सच मटेरियल और सच सब्सटेंसेस या सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट. तो ये क्या है? पेपर, ठीक है, बुक है वो किससे बनी है? पेपर से बनी है. सो आई कैन से पेपर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक क्या है? वी कैनॉट सी एनीथिंग. ओके, व्हाट आर दोस ऑब्जेक्ट्स थ्रू व्हिच वी कैनॉट सी एनीथिंग? ओके, cannot see anything. The third type, ठीक है, ओपेक में आपके काफी सारे वुड है, प्लास्टिक्स है, राइट, वॉल है, राइट, बहुत सारे एग्जांपल्स है, राइट, which are opaque in nature. Then one more type of substance is that is translucent. Translucent substances. ओके, ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस क्या है? तो इफ यू हैव सीन सम, आपने ऑब्जर्व किया है या आपने एक्सपीरियंस किया है आपकी लाइफ में कि पेपर है, पेपर के ऊपर समहाउ ऑयल ड्रॉप्स गिर गए हैं गलती से, खाने के हो या और किसी के ऑयल ड्रॉप्स गिर गए, राइट? तो यू मस्ट हैव सीन कि उसके नीचे हाथ रखोगे तो यू कैन सी अ हैंड, बट क्लियर नहीं दिख पाएगा, राइट? यू कैन नॉट सी इट क्लियरली. ओके, सो सर्टन प्लास्टिक्स भी होते हैं, राइट, जिसके हम क्या होता है पीछे रखते हैं तो हमको क्लियर नहीं दिखा, बट हमको ये मेक आउट, वी कैन इजीली मेक आउट कि हाँ कुछ तो है यहाँ पर, कुछ ये शेप का है, राइट, बट वी कैन नॉट मेक आउट क्लियरली. देन सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज ट्रांसल्यूसेंट. मींस व्हाट? वी कैन सी बट नॉट क्लियरली. अंडरस्टूड? वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स बट नॉट क्लियरली. हम क्लियरली चीजों को नहीं देख पाएंगे, राइट? सो दीज आर सर्टन प्रॉपर्टीज. ठीक है, ये तीन हमने आज पढ़ी.
आगे हमने अपीयरेंस वी हैव डिस्कस्ड एंड हार्डनेस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, राइट। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि ग्रुपिंग एनी सब्सटेंसेस, ठीक है, ग्रुपिंग अब जब करते हो कोई भी चीज़ों का, ठीक है, सिमिलर ग्रुप्स और डिसिमिलर ग्रुप्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज, राइट, इससे हमारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर अस टू मेक आउट वेयर द ऑब्जेक्ट इट इज। एक सिंपल एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन एंड विल एंड द चैप्टर। ग्रोसरी शॉप इफ यू हैव सीन, चॉकलेट्स आगे बॉटल में रखी होती है, राइट, जार्स में रखी होती है। वन साइड इफ यू सी तो वो ट्रांसपेरेंट कबोर्ड में दे हैव मस्ट हैव केप्ट द बिस्किट्स, ठीक है। दूसरे साइड इफ यू मस्ट हैव सीन तो वो सोप्स रखते हैं या दूसरी चीजें रखती है, राइट। जो ग्रेन्स होते हैं, वीट, राइट, पल्सेस, सीरियल्स, वो सब क्या होते हैं, वो एक जगह पर स्टोर करते हैं। व्हाई? बिकॉज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी विल हेल्प अस टू लोकेट द ऑब्जेक्ट। हमको पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कैसी प्रॉपर्टी का है, सो दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट, ठीक है। अगर समझ लो यही ग्रोसरी शॉप में जो ओनर है, ठीक है, द शॉपकीपर, इफ ही हैज पुट द ऑब्जेक्ट्स रैंडमली, सो सोचो कस्टमर को कितना वेट करना पड़ता, राइट। सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन एंड एक्सपीरियंस दैट घर में जो मदर है, राइट, दे व्हेन दे स्टोर सर्टन ग्रेन्स, तो वो किस में होते हैं, ग्रेन्स या पल्सेस या सीरियल से, राइट, वो दे स्टोर इट इन ट्रांसपेरेंट जार। क्यों? सो दैट एवरी टाइम हमको सभी डब्बे खोलने ना पड़े, राइट। ऑल द वेसल्स वी डोंट नीड टू ओपन। सिर्फ क्या है, अपने ट्रांसपेरेंट है तो आपको दिख ही जाएगा क्लियरली। सो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी वी आर सॉर्टिंग आउट सो दैट हमारे लिए चीजें आसान हो जाए, राइट। सो दैट वाज द मेन एम फॉर स्टडिंग दिस चैप्टर। आई होप यू हैव गॉन अंडरस्टूड द चैप्टर thoroughly. Fine. Thank you, class.